Hello everyone, welcome to PRATHAM Test Prep. My name is Ashish Bhargav and here we have with another episode of Daily News Analysis. So कैसे हैं आप सब? I hope that you guys are doing well. आप सारे अच्छे होंगे. So dear friend, this is very important to understand about the importance of the newspaper. And why I'm telling you this, because the newspaper है आपका, उसमें आपके current affairs के बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके कवर हो जाते हैं. जैसा कि आपको पता होगा कि न्यूज़पेपर प्ले अ वाइटल रोल फॉर द एनीबडी हु इज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, राइट? सो in that context you should understand about the importance of the newspaper, because we'll discuss each and everything in the detailed manner. Majorly we discuss about the Hindu and Indian Express. And what exactly we discuss in newspaper analysis? We discuss about national news, we discuss about international news, we discuss about economy-based news, sports-based news, science and tech, personal news, American conference and miscellaneous. And we also discuss about as Supreme Court verdict, any amendments, any bills which is in the parliament. This is also we discuss in newspaper analysis. So dear friend, this is very important to understand about the importance of newspaper, because most of the topic in your exam that we cover from the newspaper, और वो directly the Hindu, Indian Express, PIB, government website और PSIS पे आपको जो मैगजीन मिलती है मंथली कंपेंडियम, उसमें भी मंथली कंपेंडियम हम बहुत सारी चीज़ों को कवर करते हैं, राइट? चलो जी. So let us remember, one book, one pen, one child and one teacher that can change the world. And here is the questions of the day. So we'll ask you the 5 questions. Stay tuned, and if you're new on the channel, please subscribe our channel. Do not forget to press the bell icon. Quick tips में सीखेंगे with the help of mnemonics how you will learn the topic of general awareness. Dear friend, is the very first topic is pi day, understanding the world most famous mathematical constant के बारे में. अब देखो यहाँ पे अमेरिकन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग पाई डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, 14th of March को. 14th of March we celebrate as a pi day worldwide as an ode of the most well-known approximation 3.14 of the mathematical constant pi. So the tradition was started by the physicist Larry Shaw of the Exploration Museum in San Francisco in the year of 1988 का टाइम था, and since seen global popularity. So on the day, mathematicians जो थे that try to raise awareness on the subject among lay persons through lectures, museums, exhibitions and pie eating competition. 2019 में यूनेस्को मतलब यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन 2019 में डियर फ्रेंड वहाँ पे आपको 48th जनरल कॉन्फ्रेंस को डिज़ाइन किया एज अ पाई डे. 48th जनरल कॉन्फ्रेंस एज अ पाई डे, इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स. पाई क्या है? पाई जो है ऑफन रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रीक लेटर पाई इज द मोस्ट फेमस फॉर ऑल मैथमेटिकल कॉन्स्टेंट्स. ये रिप्रेजेंट करता है रेशियो ऑफ अ सर्कल सर्कमफ्रेंसेस, मतलब बाउंड्री को. देखो एक सर्कल है, सर्कल में ये आपकी जो है वो ये इसकी होती है सर्कमफ्रेंसेस. ये वाला पोर्शन जो आप देख रहे हैं ये आपका सर्कमफ्रेंसेस है, यहाँ वाला, ठीक है. सो सर्कमफ्रेंसेस इन बाउंड्री टू इट्स डायमीटर. डायमीटर मतलब जो आपका सेंटर से ये वाला स्पेस है, ठीक है, वो है डायमीटर. सो इन अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल बाउंड्री पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, regardless the circle size, the ratio always remains constant. So pi is an irrational number. It is decimal with no and no repeating pattern, which is most often approximately 3.14 and often fraction is 22/7. pi को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? देखो, the importance of pi has been recognized at least 4,000 years. आप समझ सकते हैं how it is important. Academic जो थे लाइक उनका नाम था पीटर बैकमैन, उनकी एक क्लास थी और हिस्ट्री ऑफ पाई इन्होंने लिखा 2000 ईयर BC. एंड उन्होंने इसमें बताया कि मैन हैड ग्रास्प्ड द सिग्निफिकेंस ऑफ द कांस्टेंट दैट इज टुडे डिनोटेड बाय पाई एंड दे फाउंड रफ अप्रॉक्सीमेशन ऑफ इट्स वैल्यू. सो जो both ancient Babylonians and ancient Egyptians came with their own measurements, probably by drawing a circle of some diameter and then measuring its circumference using a rope of say diameter in its length. Babylonians settled 25/8, which means
3.125 as the value of pi, where the जो ancient Egyptians थे that settled 16.16/9 approximately 3.16. तो Greek में who came up with the method of calculate pi that remained in use till the 17th century. उन्होंने फिर रियलाइज करा इस चीज़ को, जो पेरीमीटर होता है ऑफ रेगुलर पॉलीगन का, जिसमें एन साइड इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल स्मॉलर देन द सर्कमफ्रेंस. ऐसे एक सर्कल है, सर्कल में ये आपका सर्कमफ्रेंस होगा एंड उसके बाद ये आपका इसमें सेंटर होगा. दिस वन इज कंसिडर्ड सेंटर एंड डायमीटर होगा जो उसके सेंटर से होकर क्रॉस करे. ठीक है. एंड हाफ जो होगा यहाँ पे ये वाला आपका रेडियस होगा इसका. ठीक है जी. तो C इक्वल टू 2πr जो है ये आपने ये देखी होंगी मैथ्स के फॉर्मूला में इसे हम यूज़ करते हैं. ठीक है. टू नोइंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल. सो प्रॉब्लम था कि इस मेथड में क्या था, जब हम पॉलीगन्स के एन साइड को काउंट करते थे. सो आर्किमिडीज ने इस मेथड को यूज़ किया एंड बाय मैथमेटिशियन उन्होंने फिर यूज़ किया. इसमें प्रॉब्लम क्या था इस मेथड में कि एक्सट्रीमली लेबर इंटेंसिव था इसमें. जैसे कि डच मैथमेटिशियन थे लुडोल्फ वैन कुलियन ने, उन्होंने ये बताया कि उसके बाद फिर आइजक न्यूटन साहब आए विच इज़ इन 1643 से 1727 में, who significantly simplified the process of calculating pi in 1666. So he calculated pi up to 16 decimal place using calculus, with he discovered along with mathematician Gottfried Lambert what had taken mathematicians years to calculate now could be done in a matter of days. Why does it all this matter? देखो सर्कल्स आर एवरीवेयर इन द वर्ल्ड. डेली लाइफ में अगर हम इसके यूसेज को देखें, सो द आर 3-dimensional शेप लाइक सिलेंडर्स, स्फीयर्स एंड कोन्स, all of which carry the proportion of pi. Knowing pi value thus has some crucial practical benefits in the field of architecture, design and engineering, from constructing water storage tanks to fashioning high-tech equipments for satellites. The value of pi is indispensable in all sort of areas, right? तो ये इसकी importance है. चलो जी, I hope this one is very clear for each and everyone. Now we move to the Kozhikode. Kozhikode to get India first cooperative museum. Amul, Indian Coffee House, Indian Farmers Fertilizer Corporation, IFCO, Kerala Dinesh Bedi. These all brands from diverse sector with one uniting factor, they all are cooperatives, right? कमेंट सेक्शन में कोई बताओ अमूल का, या अभी कोई बच्चा बता सकता है अमूल के फुल फॉर्म. जी चलो देखो मैं बता देता हूँ. आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड. हु और कौन सा इंसान था जिन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया था, ज़रूर बताओ इफ़ यू नो. सो यहाँ पे जितने भी आप देख रहे हैं, इंडियन कॉफ़ी हाउस, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव्स, केरला दिनेश बेदी, these all our brands are, we can say, cooperatives. So these are many others will be showcased at the almost ready 40-story International Cooperative Museum ICM in the heart of Kozhikode, Kerala. It will be a distinction to learn about India's cooperative movement that has a history of more than a century. अब यहाँ पे क्या है, ये इंडिया का पहला कोऑपरेटिव म्यूजियम है. सो ICM जो है यहाँ पे वो चीज़ें आपको समझिए. इंटरनेशनल कोऑपरेटिव म्यूजियम इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ NK अब्दुर्रहीमन, द चेयरपर्सन ऑफ कैरासे बैंक. द इनिशियल वर्क जो था उन्होंने स्टार्ट किया था 2016 में. द कंस्ट्रक्शन इज बीइंग कैरिड आउट बाय लेबर कॉन्ट्रैक्ट सोसाइटी के हिसाब से. Meanwhile, the bank has approached the National Bank for Agriculture and Rural Development and the International Cooperative Alliance for support to make the project even bigger. So we have already contacted cooperatives in some countries in Europe and Japan for information and display material. चलो जी नेक्स्ट आर्टिकल तरफ मूव करते हैं. इस आर्टिकल में हम देखा होगा ऑन जजेस एंड ब्यूरोक्रेट्स ज्वाइनिंग पॉलिटिक्स. What are the restrictions on judges and senior government officials with respect to their employment when it comes to the post within the government or in its private sphere? Can a former judge join a political party and contest election? देखो recently क्या था, मैं आपको थोड़ी बहुत बैकग्राउंड बता दूं इसमें कि कैलकाटा हाई कोर्ट में judges and a senior IPS officer in West Bengal resigned from their post and joined political parties.
This has once again raised question on propriety about independent constitutional authority and other senior government officials joining political parties after demitting office. क्या कोई constitutional restriction है इनके लिए? चलो देखो. The Constitution work on the principle on checks and balance between various organs. So the executive is accountable to the legislature. समझो, तीन बॉडी होती है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की. एक तो द एग्जीक्यूटिव, वन इज लेजिस्लेचर एंड देन थर्ड इज जुडिशरी. सो एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज मोदी जी. तो मोदी जी रिस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट को. एंड जुडिशरी जो है, दैट इज अ we have adopted independent judiciary structure. So the Constitution work on the principle of checks and balance between various organs. So the executive is accountable to the legislature and independent judiciary keeps a check on both these branches of the state. So there are also other independent bodies like the Election Commission, Public Service Commission, right? CAG, Comptroller and Auditor General, CAG, who are required to perform their constitutional duties without any interference from the government. What about political post? देखो, सुप्रीम कोर्ट के जज थे 1967, 1983 में, who resigned from the post to contest the presidential and parliamentary election from Assam. Right? Respectively, another Supreme Court judge joined a political party in Tamil Nadu and contested elections 5 years after the retirement in 1999. A former chief election commissioner that became a Rajya Sabha member and minister in 2004. 3 साल के बाद उसके रिटायरमेंट के बाद रिसेंटली रिटायर CGI जो थे, इंडिया वॉज नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा 2020 विद इन 4 months ऑफ देयर रिटायरमेंट. रिकमेंडेशन क्या है? रिकमेंडेशन ये है कि द इलेक्शन कमीशन हैड इन 2012 recommended the union government to provide a cooling off period for top bureaucrats after their retirement before they could join political parties and contest elections. However, the government had rejected the recommendation based on the opinion of Attorney General that this may not be in line with the constitutional provision and democratic values. So, क्या एक cooling off period desirable है? Attorney General ने ये चीज़ बताया. So, there are no restrictions when it comes to joining political parties, contesting elections or being nominated to certain posts. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 2012 में रिकमेंड किया था यूनियन गवर्नमेंट को. सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्टेक्स्ट अबाउट द जजेस एंड ब्यूरोक्रेट्स. द टू थिंग्स दैट वी शुड नो, व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शंस ऑन जजेस, नाउ वी अंडरस्टूड, एंड द सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल विथ रिस्पेक्ट टू टू देयर एम्प्लॉयमेंट व्हेन इट कम्स टू अदर पोस्ट एंड गवर्नमेंट और इन प्राइवेट स्फीयर. क्या एक फॉर्मर जज, क्या उसकी व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्ट्रिक्शंस and what are the political posts and what are the recommendation given to the Election Commission of India. ठीक है, ये सारी चीज़ हम जान चुके हैं. Let's move to the next one, genome editing. Dear friends, how it is different from the technology. India has allowed easier clearance norms for genome edited plants falling in its categories of SDN1 and SDN2, distinguishing them from genetically modified crops. Genome editing, a decade ago, a technique for cut DNA strands and edit gene was discovered, which allowed scientists to make targeted intervention in the genome sequence of organism. So, in that context, we should to understand about the depending on the nature, like to edit. The process is classified as SDN1, SDN2, and SDN3. SDN1 introduced changes in the host genome. ये क्या है? हमारा होस्ट जीनोम की बात करते हैं यहाँ पे. एंड द सेकेंड वन इज टॉकिंग अबाउट अ स्मॉल DNA template is used to generate a specific changes. So these things that we need to understand about how it will neither process involve align involve aligned genetic material and its end result is जो मटीरियल है इंडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम कन्वेंशनली ब्रेड वराइटीज़. GMO के डेवलपमेंट जो है इसमें CRY1 AC भी आता है, CRY2 AB जीन्स आता है. ठीक है, चलो जी, इसको हम एग्रीकल्चर में भी यूज़ करते हैं जीनोम एडिटिंग का, टू जनरेट वेरिएंट्स एंड बेटर यील्डिंग एंड मोर रेसिस्टेंट टू बायोटिक एंड अबायोटिक स्ट्रेस के लिए. हाउ द अब देखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में 2 नए लोग आए.
कमेंट सेक्शन में कोई भी इसका नाम बताओ। और हमारे अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? वो है हमारे राजीव कुमार। राजीव कुमार जी हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। 2 नए बंदे को अपॉइंट किया गया है, दोनों IAS ऑफिसर हैं। आप उनका नाम बताओ। गोयल साहब नहीं है अभी। ये क्लैट के एग्जाम में भी इस बार पूछा था कि इलेक्शन कमिश्नर में उनका अभी न्यूली कौन अपॉइंट किया गया। ओके, जब भी कभी इलेक्शन की डेट अनाउंस होती है तो उस टाइम में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, अब इसे हिंदी में कहते हैं चुनाव आचार संहिता। So, Model Code of Conduct (MCC) is coming into force following the announcement of the Lok Sabha poll scheduled by the Election Commission. So, MCC forbids ministers from using official machinery for poll work and from combining official visits with electioneering, advertisement, extolling the work of incumbent government using public money are to be avoided. आप पैसा यूज नहीं कर सकते। So the government cannot announce any financial grants, promise construction facilities and make any ad hoc appointment during the time of code is in force. So model code of conduct में आप ऐसा नहीं कर सकते। Kerala was the first state to adopt a code of conduct for election. 1960 में वहाँ पे ahead of the assembly election in the state, the administration prepared a draft code that covered important aspects of electioneering such as processions, political रैलीज एंड स्पीचेस। मतलब ये सब आप नहीं कर सकते। अब जब भी कभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अनाउंस होती है तो कभी भी अब आप रैली नहीं देखोगे आप। इट वॉज ओनली 1974 जस्ट बिफोर द मिड टर्म जनरल इलेक्शन दैट द ECR रिलीज अ फॉर्मल MCC। क्यों ऐसा? द कोड वाज आल्सो सर्कुलेट ड्यूरिंग पार्लियामेंट्री इलेक्शंस ऑफ 1977 और इस टाइम तक जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वॉज मीन टू गाइड द कंडक्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स ओनली। फिर भी September 12, 1979 को मीटिंग ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, द कमीशन वॉज apprised of the misuse of official machinery by parties in power. The commission was told that ruling parties monopolize public space, making it difficult for others to hold meetings. There were also examples of the party in power publishing advertisement at the cost of public exchequer. So the Election Commission, just before the 1979 election, released a revised code with 7 parts, with 1 part devoted to the party in power and what it could and could not. Once polls were announced, Model Code of Conduct has now evolved in a key part of conducting fair and free election. अब इस आर्टिकल में देखो पूछा है इन्होंने कि बताया इन्होंने कि यहाँ पे डिले क्यों हुआ है इलेक्शन कमीशन को। क्विटिंग फेस्टिवल्स, वाई लोकसभा पोल्स विल एक्सटेंड इनटू जून। 2024 में लोकसभा इलेक्शन एक्सटेंडिंग इनटू द पीक और समर मंथ ऑफ जून फॉर ओनली द सेकेंड टाइम इन कंट्री इलेक्टोरल हिस्ट्री marks a 44-day election period, second longest after the first parliamentary election 1951. ये बात होगी यहाँ पे 2024 की। This protracted process has been necessitated by a combination factor. First general election Lok Sabha was held over 68 phase में from October 25 से 1951 से February 21 1952 तक चली थी। पहला जो हमारा लोकसभा इलेक्शन हुआ था। More than 70 years later, the 2024 parliamentary election, and with a record number of 96.8 crore voters, is said to be the longest. That apart, the only other time general elections were held in June, that was the 1991 Lok Sabha polls, but that was because the Chandrasekhar government was dissolved 16 months after it was sworn in. Only other time था where the general elections were held in June was 1991 Lok Sabha polls, but it was in the Lok Sabha election. अब ऐसा क्यों हुआ देखो। Why process will go until June? In the last 4 election cycles held since 2004, voting has traditionally taken place in April and May, and the new members of parliament being elected by the end of May. 2019 में the last day of polling was May 19 and result was announced on May 23rd, right? इस साल even as the number of phases remains the same 7 and the last date of polling is June 1st and result will be announced on June 4th. The spillover into June sources it primarily due to the 2 regions, a 6-day delay in the announcement of poll compared to 2019 and consecutive festivals such as Holi की वजह से
तमिलनाडु न्यू ईयर है, वहाँ पे बिहू, बैसाखी इन मार्च एंड अप्रैल, जिसकी वजह से डिले हुआ। ठीक है। कमीशन हैड टू इंश्योर दैट इंपॉर्टेंट डेट्स सच एज द लास्ट डे ऑफ विड्रॉल और पोलिंग डेज डिड नॉट कोइंसिडाइड विद दीज फेस्टिवल्स। चलो जी, और टाइम जो था गोयल का रेजिग्नेशन जी का, अरुण गोयल। द थर्ड इलेक्शन कमिश्नर अनुप चंद्रा पांडे हैज़ ऑलरेडी रिटायर्ड ऑन द February 24th। तो ये सारे उसके थोड़े बहुत रीज़न इनमें मेंशन करी हुई है। चलो जी, ये बात हो रही है MIRB के बारे में। MIRB के मतलब मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल्स। MIRB एक मिसाइल है जो इन्हेंस करता है रिडंडेंसी एज सिंगल मिसाइल दैट कैन परफॉर्म द रोल ऑफ सेवरल, और ये हेल्प करता है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की, विच इज स्पेशली इंपॉर्टेंट सिंस इंडियाज एडवर्सरीज आर डिप्लॉइंग सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंसेस। चलो जी, नाउ क्विक टिप्स में देखते हैं आज का हमारा क्या है। देखो, क्विक टिप्स में है परमानेंट मेंबर्स ऑफ UNSC। UNSC बोले तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। फ्रेज है F स्टैंड ऑफ फ्रांस, रशिया, अमेरिका, चाइना एंड इंग्लैंड। और नाउ ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है UN का। फेसर्स जैसे फ्रेंच, अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, रशियन, स्पेनिश। दिल्ली सल्तनत के किंग को लर्न करने के लिए आप सिंपल लर्न करो, सब खाओ टमाटर, सब लो मज़े। S स्टैंड फॉर स्लीव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी और मुगल्स। एक अपने नोट्स कैसे बनाने चाहिए, मैंने आपको वहाँ पे अपने खुद के नोट्स से बनाए हुए आपको मैं बता देता हूँ कि आप ऐसे विद द हेल्प ऑफ माइंड मैप्स, इसे क्या कहते हैं, ये हमारा होता है माइंड मैप्स। माइंड मैप्स आप यूज़ करके आप बना सकते हो। आर्टिकल 15 टॉकिंग अबाउट डिस्क्रिमिनेशन, 17 अनटचेबिलिटी, 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 124 टॉकिंग अबाउट सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 214 टॉकिंग अबाउट हाई कोर्ट, and 51A talking about fundamental duties, 343, 51 about the Hindi language, article 24 talking about children below 14 years cannot work, और 3 आर्टिकल आपके इमरजेंसी के लिए। ठीक है जी, चलो नाउ इट्स टाइम टू क्वेश्चंस ऑफ द डे। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, टेक योर टाइम एंड थिंक अबाउट द राइट आंसर। ओके, सो पूछिए आपसे, फॉलोइंग गिव्स द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स अकॉर्डिंग टू कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अभी कौन करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। सो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट एक इंडेक्स है दैट इज डिजाइन टू मेजर जेंडर इक्वालिटी। इट वाज फर्स्ट पब्लिश इन 2006 बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। उद्गम पोर्टल को किसने डेवलप करा, RBI, सेबी, नाबार्ड और स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी। ये है आपका द राइट आंसर इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो इसको डेवलप किया है RBI ने। इट स्टैंड्स फॉर अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। इट सर्व एज अ सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म फॉर द पब्लिक टू सर्च for unclaimed deposits across multiple banks. So the portal allows users to search for various types of accounts covered by the Depositor Education and Awareness DEA fund by RBI. Next question है, following years were the first Oscar award को present किया गया. It was in year 1929. एक कमेंट सेक्शन में बताना कि ऐसे इंसान जिनको ऑस्कर और नोबेल प्राइज दोनों मिला है, बताओ। आई नो यू गाइज आर वेरी स्मार्ट, बता दोगे कमेंट सेक्शन में, मुझे आंसर चाहिए एंड आई विल रिप्लाई डेफिनेटली। 1929 में ऑस्कर अवार्ड वाज फर्स्ट रिप्रेजेंटेड एंड द विनर्स ऑफ अवार्ड्स रिसीव्ड अ गोल्ड प्लेटेड स्टैट्यूट नोन एज ऑस्कर। Which of the following schedule of the Constitution gives a clear constitutional recognition to the existence of system of political parties? और obvious है 10th schedule because talking about anti-defection law. Anti-defection law. तो obvious C जो है आपका is the right answer. To 10th schedule of the Constitution which embodies the anti-defection law.
that is designed to prevent the evil of mischief of political defection that is motivated by the lure of office to material benefits or other similar consideration. लास्ट क्वेश्चन पे पहुंचे, वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट क्यों कहते हैं? देखो, बिकॉज इंडियाज follows parliamentary form of government, which means the executive is solely responsible to the legislature, right? That is parliamentary form of government. Okay, so Westminster is a place in London where the British Parliament is located. It is often used as a symbol of the British Parliament. The Parliament is the legislative organ of Union government. It occupies a preeminent and central position in the democratic political system due to adoption of the parliamentary form of government, also known as Westminster model of government. Dear friend, this is all about the session, and I hope that you enjoyed the session a lot. If you have any questions regarding this, please let me know in the comment section. Make sure if you are new in this channel, please subscribe our channel and do not forget to press the bell icon. We'll meet you in the next YouTube session. Till then, bye-bye and take care. If you have any question, please let me know in the comment section. अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रखें. My name is Ashish Bhargav. फिर मैं मिलते हैं आपके next YouTube session. But till then, bye-bye and take care and best of luck for your exam. Thank you so much for joining with us.